is Sara Nafees Siddiqui. I'd like to request firstly thank you for great insight. If you guys could look at the screen behind you and look at employees' well-being and mental health written. Like I mean it, please look at. So the employees, like one observation is that for a second if we turn employees red and well-being and mental health black, and shift our focus on employees, because a lot of the times even as HR professionals हम लोग को अपने employer का perspective बड़ा एक because that's the vision and mission that we have to take on. I feel that if you look at these leading ultimate employers, Facebook, Google, Microsoft, they've now started asking people when they're applying about their age. You know, either it's like what year you were born in or your age. It's because different things work for different types of generations. If you consider millennials, and now that Gen Zs are also, are being added to the workforce, how do you think that can be, incorporated into our HR practices? Because productivity की बात हुई, compassion की बात हुई, strengths की बात हुई, weaknesses की बात हुई. So I think it's very important, and our HR policies, everything will work differently if we understand that employees, instead of focusing just on the mission and vision of a company and as employer, as HR professionals. I've seen that people, fresh graduates, have very different productivity hours. You talked about those 3 to 4 hours. They might be different for you. Your productive hours might be from between 9 till 11. For some others, it's 3. And I think if we understand that employees' well-being and mental health will follow, at least at workplace. As a working mother, very different types of, I look at my employer for very different types of support. As any man who's catering to ill parents, they will require different types of compassion. So, customization in how we deal with our employees is something that I find that is really actively missing. And therefore, our shift is mostly towards well-being and mental health and a mission and vision that we have to carry on. And then, meanwhile, we tend to neglect and ignore, unintentionally, of course, employees. Who are our employees? What is this equivalent question? So, any insight, please? Thank you. एक तो इन्होंने इतना डिटेल्ड क्वेश्चन किया, काफी देर से इस हॉल में क्लैप नहीं हुई. क्या ख्याल है इनके लिए क्लैप होनी चाहिए? इतना डिटेल्ड क्वेश्चन और इतनी देर से हम बैठे मैंने तो देखा भी नहीं कि हमारा फोकस एम्प्लॉइज पे है या नहीं. फिर मुझे याद है नहीं हमारा फोकस एम्प्लॉइज पे ही है. वो फोकस देने के लिए तो हमने पैनल को आज रिक्वेस्ट की हुई है कि ठीक है वेलबींग और मेंटल हेल्थ तो ठीक है इंपॉर्टेंस है, पर एम्प्लॉइज पे फोकस कैसे किया जाए? जी जवाब अब पैनल मेंबर्स आपस में लड़ पड़ेंगे, कौन जवाब देगा? सब देना चाहेंगे. जी. I think because you're a data person, it is said that by 2025, more than 68% of your workforce will consist of Gen Zs. तो हम सबको एक तो बाल तो वैसे ही डाई कराने ही पड़ेंगे, लेकिन बाकी भी आप प्लीज बताएं. जी. Compassion. I think आपका जो question है is I think very important and very well highlighted कि ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं हो रहा, हम एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं. एंड आई थिंक ये जो गूगल की प्रैक्टिस आपने बताई और बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो एज जरूर पूछते हैं, देखते हैं कि कौन सी जनरेशन से आपका ताल्लुक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 एस्पेक्ट्स में इसमें आपको बताऊंगा. एक चीज कि जो इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री क्या है, राइट? और उस इन्वेंट्री को फिर वो एक अप्रोच होती है जिसको कहते हैं MPE अप्रोच. फर्स्ट यू मेजर व्हाट यू हैव, आपके पास असला कितना है और क्या है, राइट? देन यू प्लान. और वंस यू प्लान, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद यू गो फॉर द एग्जीक्यूशन. अब ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपके पास इन्वेंट्री है. आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसमें आपके पास 5-6 लोगों की जरूरत है, वो डिफरेंट स्किल सेट लेकर आए हैं जो उनकी जनरेशन है, दैट प्लेज इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल. अब उसका रीजन मैं आपको ये बता देता हूँ कि
जो मेरी जनरेशन है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, अच्छा मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमारे जब हम छोटे थे तो हमें, आप में से किस किस ने ऐनक वाला जिन देखा? सो आप लोग मेरे जितने हैं तकरीबन। सो नहीं, मैंने छोटा। आपको याद होगा एट दैट टाइम हम एक हफ्ता वेट करते थे एक एपिसोड का, और उसके बाद वो ऐसी जगह पे एपिसोड रोक देते थे जहां पे वो ऐनक वाला जिन जो है वो आके कोई उसने कुछ किया है और उसका रिजल्ट क्या है वो अगली किस्म पता चलेगा, राइट? सो क्यूरियोसिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और हमें एक हफ्ता वेट करना पड़ता था। वी हैड नो अदर ऑप्शन। उसका फायदा क्या हुआ? एंड ये सब चीजों में हो रहा था। आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप कोई इस तरह की ये जो भी था ऐनक वाला जिन वो देख रहे हैं, उसका हमें फायदा क्या हुआ? एज ए पर्सन हमारा प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या असर हुआ? हमारी पेशेंस बहुत बेहतर हो गई। वी आर वेरी वेरी पेशेंट जनरेशन। हम लोग सब्र करते हैं और उसका हमें बहुत सी चीजों में फायदा होता है। अब नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, यूट्यूब खोला, पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स खोला, पूरा का पूरा सीजन देख लिया, वेट करने का चक्कर ही नहीं है। उनकी पेशेंस और हमारी पेशेंस में जमीन आसमान, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ यू हैव अ प्रोजेक्ट, आपने उसके अंदर लोगों को प्लेस करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन किस जनरेशन से है और मैंने उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, कौन सा टास्क में उसको। अगर आप एक ऐसे बंदे को जिसे नेटफ्लिक्स पे पूरा सीजन देख लेना है और उसको पता ही नहीं है कि एक हफ्ता वेट किस तरह करते हैं केस के लिए, तो वो तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगा। वो कह रहा है कि बस टाइम काफी हो, माइक कह रहा है देर एक्चुअली ग्रोइंग। हाँ फिर ठीक। सो पॉइंट इज कि दिस इज हाउ यू प्लेस। आपकी वो बंदा भी टेंशन में रहेगा और दूसरा जो हम जैसा बंदा है वो क्या करेगा? वो कहेगा यार थोड़ा सब्र करके सुकून से चलो, कोई मसला नहीं है, लेट्स गो थ्रू इट, 2 दफा 3 दफा रिव्यू करो, तब होगा। और एक अलाइनमेंट नहीं होगी। सो दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड बी एबल टू मैनेज इट, कि उसको अगर हम फैक्टर इन करते हैं उसकी जनरेशन को, तो वील बी एबल टू प्लान आवर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम उसको मेजर नहीं करेंगे अपनी इन्वेंट्री को, तो हम इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकते, और अगर इफेक्टिव प्लानिंग नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन तो होगा, एंड उसका एक रिजल्ट जो होगा दैट इज स्ट्रेस। एंड जब प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा तो you'll feel like a loser, which will eventually impact your mental health. I think that's my take. Thank you so much, Khaliq साहब, इतना डिटेल क्वेश्चन का, इतना डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव, in fact